Hello friends, welcome to Bankers platform. So friends, today we will discuss memory record questions of the course that is certificate exam in foreign exchange topic. So friends, let's start. So friends, in this section, we'll discuss the memory record questions of 2023. So as you know that IIBF is conducting the exam on second and fourth Saturday. So continuously there are so many exams have happened. So we have compiled which are most expected also. Okay. So let's discuss. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर द मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस विच आर कमिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज लास्ट 3-4 मंथ्स में जो है ऑलरेडी आईआईबीएफ ने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट किए सो वी हैव टेकन आउट which are regularly coming. Okay, so these are the memory record questions 2023. So from Jan till date, whatever questions have come that we have covered here. Okay, so let's start with our first question. Liberalized remittance scheme LRS was introduced in India in Dash by Reserve Bank of India. It is a scheme that enables Indian resident to remit funds abroad for certain specified purposes. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो LRS स्कीम है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई है आरबीआई के द्वारा. Okay, so there were some options. So for you, options are 2000, 2001, 2004, 2010. So let's see what will be the correct answer. And the correct answer is 2004. So friends, जो LRS scheme है, this scheme is introduced by RBI in 2004. Okay, so 2004 में इस scheme को RBI ने launch किया, introduce in India. Okay, so let's see second question. The LRS remittance limit is USD dash for every financial year. Thus, an individual can remit multiple times during the financial year. तो friends, आपको बताना है कि जो LRS scheme है, LRS scheme में what is the maximum limit for a financial year? एक financial year की क्या limit है for LRS scheme? Okay, and your options are $1 lakh, $1.5 lakh, $2.5 lakh, $5 lakh. So let's see what is the correct answer. The correct answer is $2.5 lakh. Okay, so up to $2.5 lakh, a individual can remit under LRS scheme. So LRS scheme में friends आप 2.5 लाख रुपए तक के रेमिटेंस कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर. ओके, so let's see next question. Incoterms, widely used term of sale, are a set of dash internationally recognized rules which define the responsibility of seller and buyers. Incoterms especially Incoterms specify who is responsible for paying for and managing the shipment, insurance, documentation, custom clearance, and other logistical activities. So friends, Incoterms is a very important topic. Foreign exchange exam में जो friends Incoterms minimum it will give you 5 to 6 marks. 5 to 6 marks का friends question आ सकता है. 1 second. Okay, 5 to 6. Okay, just you remember that it is 5 to 6 marks. Okay, so 5 to 6 marks questions जो हैं friends आ सकते हैं Incoterms में. So here the question is that Incoterms is a set of dash internationally recognized rules. तो आपको बताना है कि Incoterms में कितने sets, how many sets are there, okay, of rules, and your options are 5, 10, 11, 15. Okay, and the correct answer is 11. So there are 11 internationally recognized rules of Incoterms. So these are very important. So we have taken here these, okay, Incoterms. So let's see one by one. Okay, so first is here friends. First Incoterm is EXW. Okay, first is EXW. So this EXW is there, and EXW full form is X works. Okay, so X work is the full form. Another is FCA, free carrier, FAS,
free alongside ship, FOB, free on board. So friends, this FOB is used very much in the exports. Okay, this you can remember that this FOB is used very much. Okay, FOB means free on board. Okay, in free on board, what happens? See, seller is here. Okay, seller is there and first carrier and along the side. So in FOB, the seller will send the goods till the port of loading. Okay, this till the port of loading. So that is called free on board. And after that, all the headache is of buyer. Okay, so friends, this is a very good, you can say, understanding of these terms. Okay, so these 11 points, these all 11 points you have to read and understand. Okay, first EXW, X work. Sometimes full form is also asked. FCA, free carrier. FAS, free along ship, alongside ship. FOB, free on board. CFR, cost and freight. CIF, cost, insurance and freight. Okay, CPT, cost paid to. CIP, carrier and insurance paid to. DPU, delivered at place, unloaded. DAP, delivered at place. DDP, delivered duty paid. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेन दिस इज दैट you have to understand. See here, X work. In X work what will happen? जो फ्रेंड सेलर है वो कैरी करेगा गुड्स को और वो उसे भेज देगा. ओके, सो हेयर इज X वर्क ओनली एग्रीड प्लेस पे. ओके, जहां पे भी ये बायर, दिस बायर विल से कि इस सामान को यहाँ तक पहुंचा दो, इस पोर्ट तक पहुंचा दो. ओके, सो व्हाट ही विल डू? X वर्क, he will send to agreed place. Okay, free carrier FCA. Here also he will send to agreed place. Free alongside ship. Okay. So यहाँ पे जो है free alongside ship में जो है वो port of loading तक उस सामान को पहुंचाएगा. Who? Seller. Seller will send the goods till the port of loading. Okay. Suppose कोई Indian seller है. Okay. And he has put the term FAS. FAS term अगर उसने रखी है तो वो जो है उसे किसी भी पोर्ट तक पहुंचा देगा, चेन्नई पोर्ट तक, मुंबई पोर्ट तक. ओके, ही विल डिलीवर द गुड्स टिल द पोर्ट. बट अगर वो एक्स वर्क है, एक्स वर्क में जो है वो एग्री प्लेस है. ओके, एंड फ्री कैरियर में भी एग्री प्लेस है. ओके, बट हेयर लाइक इस केस में क्या होगा कि सेलर जो है वो किसी उसके गोडाउन में पहुंचा देगा एज पर द बायर रिक्वेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज एफओबी. एफओबी मीन्स फ्री ऑन बोर्ड. और इसमें भी जो है वो सेलर जो है वो फर्स्ट कैरियर, फिर अलोंग साइड शिप, लोडिंग पोर्ट, और यहाँ पे है आपका शिपमेंट. ओके, तो इस पॉइंट तक वो एफओबी में लेके जाएगा. ओके, सीएफआर, कॉस्ट एंड फ्रेट. तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन दी है दैट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक रहेगा सामान. ओके, आफ्टर दैट यहाँ से कॉस्ट पेड टू, यहाँ से जो है सामान वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक जाएगा. ओके, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड हियर place of destination means maybe any go down, but destination means direct to the buyer. Okay, this DAP, DDP यहाँ पे जो है ये direct to the buyer है. Okay, सो यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंड्स दिस मार्क इज देयर, ट्रांसफर ऑफ रिस्क. ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है सेलर का रिस्क फिनिश हो जाता है. ओके, इस पॉइंट पे ओके, दीज आर द डिफरेंट पॉइंट इज गिवन वेयर द सेलर रिस्क इज ट्रांसफर. सो फ्रेंड्स यू कैन रीड दिस and understand this from the book also. So this is the little bit explanation on input terms because it will give you marks. यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. ओके, केस स्टडी बेस लाइक दे विल से दैट कि एफओबी में जो है buyer how much risk is to the buyer, at what point risk is transferred. So loading port, here risk is transferred from FOB, free on board, to port of loading. So these all type of case of study question can be asked from this point. So I hope so you understood. Okay, let's see next point, that is question number 4.
foreign remittance pertaining to permissible capital account transaction. If the applicant seeking to make remittance is a new customer of the bank, authorized dealer should carry out due diligence, okay, on opening, operation, and maintenance of account. Further, the AD should obtain bank statement for previous year from the applicant to satisfy themselves regarding the source of fund. If such bank statement is not available, copy of latest income tax assessment return filed by the applicant may be obtained. He has to furnish form dash regarding the purpose of the remittance. Okay, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी पर्सन है, ओके, ही वांट टू मेक एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है, सो व्हाट आर द ड्यू डिलिजेंस वन ऑथराइज्ड डीलर हैज टू फॉलो। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इन ड्यू डिलिजेंस, सी दिस पॉइंट, opening, operation, and maintenance of the account. Okay, so this AD has to confirm. AD means authorized dealer. Okay, should obtain bank statement. Bank statement of previous year from the applicant to satisfy about the source of fund. तो सोर्स ऑफ फंड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है हमें ये डॉक्यूमेंट्स भी ऑब्टेन करने हैं, बिकॉज केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, वहां पे इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे दैट ए कस्टमर अप्रोच यू फॉर द फॉरेन रेमिटेंस, सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू विल टेक। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, बट एज पर द गाइडलाइन जैसे यहाँ पे दिया गया दैट बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, बैंक स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर की हमें लेनी है। सोर्स ऑफ फंड जो है हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके, एडी शुड सेटिस्फाई अबाउट सोर्स ऑफ फंड, ओके। इफ सच बैंक स्टेटमेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर वो बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस जो है कॉपीज ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर और रिटर्न फाइल्ड बाय एप्लीकेंट में बी ऑब्टेन। तो फ्रेंड्स ये जो लाइंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से केस स्टडी के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ओके। ही हैज टू फर्निश फॉर्म डैश, तो आपको बताना है कि फॉरेन रेमिटेंस के लिए अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सा फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा कस्टमर को, एंड डिक्लेयर दैट द फंड्स बिलोंग टू हिम एंड विल नॉट बी यूज फॉर पर्पस ऑफ प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड अंडर द स्कीम, ओके। किसी भी प्रोहिबिटेड और टाइप की चीजों के लिए वो यूज नहीं होंगे, ओके। सो विच फॉर्म विल बी यूज, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्म A2, ओके, दिस इज फॉर्म A2। तो फ्रेंड्स कोई भी कस्टमर है अगर वो रेमिटेंस करना चाहता है किसी भी बैंक से, ओके, ही हैज टू सबमिट फॉर्म A2 फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस, ओके। सो क्वेश्चन एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू by putting these type of point, capital account transaction, so whether it is capital account transaction or current account transaction, दोनों ही केसेस में फ्रेंड्स आपको फॉर्म A2 जो है वो सबमिट करना है, मीन्स कस्टमर को फॉर्म A2 सबमिट करना है बैंक में, ओके, फॉर मेकिंग द फॉरेन रेमिटेंस, ओके। और उसके साथ जो है जो एडी है, ऑथराइज डीलर, जो बैंकर है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, उसे इस ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना है, दैट इज कि जो उसका अकाउंट है उसका ओपनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैसा है, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस करना है कि कोई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं इन्वॉल्व है, whether he is making some fraud transaction, okay, because money laundering can also be done through foreign exchange, okay. So further AD should obtain, okay, this point you have to remember, further AD should obtain bank statement of previous year, तो बैंक स्टेटमेंट लेना है प्रीवियस ईयर का एप्लीकेंट से टू सेटिस्फाई देमसेल्फ, ओके। एंड सोर्स ऑफ फंड हमें पता होना चाहिए, और अगर वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट अवेलेबल, देन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर और रिटर्न फाइल, ओके। सो दीज आर द थिंग्स वन हैज टू टेक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ECB। ECB फ्रेंड्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ECB जो है इस टॉपिक से आपको यू कैन से 3 to 4 marks, okay, if you are done with the ECG, 3 to 4 marks you will get from this, okay, questions of 4 to 5, 3 to 4 marks, not 5, this much it can come from this topic, okay. So let's see, ECB can be availed at lower rates. There are a number of guidelines and restrictions that must be followed. Restrictions mainly apply to the amount that can be borrowed and the maturity of the external commercial borrowing. Amounts in excess of $20 million will have maturity period
of at least dash years. Amount under $20 million will have maturity period of at least dash year on average. The manner in which the funds are used will also be subject to certain restrictions. तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ईसीबी है, अगर उसका जो अमाउंट है वो $20 million से एक्सीड करता है तो उसकी क्या मेच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए, एंड अगर वो $20 million से नीचे है, अंडर है, तो उसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर, एंड द राइट आंसर इज फॉर एक्सेस $20 million it will be 5 years. Okay, and under $20 million that will be 3 years. Okay, and 3 years from generally जो maturity period है ECB का, that is 3 years. Okay, and if the amount is more than $20 million, then it will be at least 5 years. Okay, I hope so it is clear. Okay, LO, BO and PO. So this is liaison office, okay, branch office, project office, are unincorporated place of business of foreign company in India and is regulated by Companies Act as well as under Dash Act. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी लाइजन ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है या प्रोजेक्ट ऑफिस जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ओपन करती है वो किससे रेगुलेट होती है. वन इज कंपनीज एक्ट, one it is regulated by Companies Act, and the second one you have to tell. Okay, and the second one will be FEMA, that is FEMA Act. So FEMA Act is also used in this regulation of LO, BO and PO. Okay, so you should friends read this topic, liaison office, because there are so many criteria for liaison office, rule regulation, branch office and project offices, how much money they can get, who will be the director, who will be the manager. So many guidelines are there, that is very important for the certificate exam. Okay, let's see question number 7. Okay, registration under Companies Act. Registration under Companies Act, a foreign company through LOB or PO shall within a 30 days. So this was the question, but I forgot to delete this. Okay, so within 30 days of establishment of its business in India, they have to file with registrar form FC1. Okay, this you remember, with such fee as provided in companies registration offices and fees rules 2014, and with documents required to be delivered for registration by foreign company in accordance to the this section. और फ्रेंड्स कभी कभी ये सेक्शन भी पूछा जाता है. ओके, दिस the documents will be submitted in accordance with section what, that is 1 of S380. No person resident outside India shall, without prior approval of the dash, establish in India a branch or a LO or a PO or any other place of business by whatever name called. The power of RBI has been delegated to AD banker in certain cases. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी पर्सन है जो रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, उसे किसके अप्रूवल से ब्रांच ऑफिस और LO and PO office they can open. And let's see what is the right answer. Correct answer is with the approval of RBI. Okay, with the approval of RBI. Only with the approval of RBI they will be able to open liaison office, project office or branch office in India. Okay, and this power is also given to AD banker. AD जो AD branches हैं फ्रेंड्स उनको भी ये फैसिलिटी है, but in certain cases, not in all cases. Okay, so mostly you can remember that RBI permission is required. Okay, RBI permission is required for opening branch office, liaison office or a project office. Okay, Dash is a scheme implemented under the Export Credit Guarantee Corporation of India ECGC. तो फ्रेंड्स ECGC से भी 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं. So you should be well aware of that ECGC and its role in the export credit and insurance facility. It is very important because 4 to 5 marks you will get if you are clear with all the data of ECGC. Okay, so you have to tell what is the name of the scheme implemented by ECGC
with a view to ease lending of loans and enhance credit availability to small scale exporter. So this you have to tell. Let's see what is the correct answer. And the correct answer is Nirvik. Okay, Nirvik. Nirvik is the correct answer. Okay, and the Nirvik full form. What is the Nirvik full form? That you have to write in the comment section. So friends, comment section में आप लिखकर बताइए what is the full form of Nirvik. And let's see how many of you will be answering this. And friends, I hope so you all are getting benefit from this video. So friends, if you are getting benefited, please like to our channel and subscribe to our channel if you have not subscribed. So friends, and also share this video with your friends who are preparing for IIBF exam of certificate in foreign exchange so that they can also be benefited. Okay, so let's see next question number 10. ECGC Limited is a government-owned export credit agency of India. It is under ownership of Ministry of Commerce and Industry, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईसीजीसी जो है वो किसके ऑनरशिप में है. ओके, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज अंडर देम. एंड व्हाट इज द हेडक्वार्टर? वेयर इज द हेडक्वार्टर? दैट यू हैव टू टेल. एंड द करेक्ट आंसर इज हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. ओके, so the headquarter is in Mumbai. Let's see next question. Question number 11. URC, Uniform Rules of Collection. Okay, 552 Article Dash, case of need. If the principal nominates a representative to act as a case of need in event of non-payment or non-acceptance, the collection instrument should clearly and fully indicate the powers of such case of need. Friends, आपको बताना है कि URC 552 किस आर्टिकल में केस ऑफ नीड डिफाइंड है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. URC, one is URC 552 and another is UC PDC 600. So friends, यहाँ से you can expect more than 10 marks questions, and case study questions will also be there from UC PDC guidelines and URC guidelines. Okay, so friends, you have to tell in which article this case of need is mentioned, and the correct answer is Article 25. Okay, in the Article 25, case of need is mentioned. Let's see next question. Question number 12. Article Dash, protest. The collection instruction should give specific instruction regarding protest. तो फिर जो भी हम कलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए भी गाइडलाइंस लिखी होनी चाहिए. ओके, इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस. ओके, एंड हियर आर्टिकल, which article tells it is also related to URC 552. तो यहाँ पे आपको बताना under which article protest is defined, and the correct answer is Article 24. Okay, so friends, these type of articles are also asked, so you have to learn all the articles, that what that article says about. So friends, this is, let's see next, that is our, this is our last point. Okay, 12, minimum 12 questions we have discussed, and rest question we will discuss in the next video because this video will be so long. So thank you friends, thanks for watching. So please like and subscribe to our channel if you have not subscribed. Thank you friends, thanks for watching, have a nice day.